वेलकम टू अनदर गाइडेड मेडिटेशन। हर हफ्ते हम ये मेडिटेशंस करते हैं और एक बहुत ही स्पेशल बॉन्ड क्रिएट होता है आपके और मेरे बीच में। आज की मेडिटेशन के लिए मैं आपको बाहर लाया हूँ। ये मेरे घर की बालकनी है और यहाँ पर जो ग्रीनरी है, जो हवा इस समय चल रही है, दैट्स अ वेरी सूदिंग एनवायरनमेंट दैट्स बीइंग एबल टू क्रिएट। अगर आपके घर के आसपास कहीं बाहर पार्क है या आपकी बालकनी है जिसको आपने मेंटेन किया है, तो वहाँ पर बैठ के भी कुछ मेडिटेशंस आप कर सकते हैं। दिल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू to your breath work, to your focus, to your concentration. अब मेडिटेशन के बारे में जब भी हम बात करते हैं लाइफ के जैसे बाकी पार्ट्स हैं, चाहे वो हमारा करियर हो, चाहे हमारा फैमिलीज हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, हर चीज़ बहुत डिफिकल्ट है मेंटेन करने के लिए। एंड चैलेंजेस ख़त्म नहीं होते हैं। मेडिटेशन भी सिमिलर चीज़ है। पिछले 7 या 8 दिन से मेरी मेडिटेशन प्रैक्टिस बिल्कुल वीक हो गई है और इट्स वेरी डिफिकल्ट स्टेट कि मेरे को पता है मैं करना चाहता हूँ, बट फिर भी देयर इज समथिंग दैट्स स्टॉपिंग मी। मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूँ ये समझा के और ये कह के कि मेडिटेशन हमारे लिए एक एंकर की तरह है। मेडिटेशन में जब हम ब्रेथ वर्क करते हैं, जब हम अपने थॉट्स को समझने की, उनके लिए प्रेजेंट होने की कोशिश करते हैं, तो वो एक एंकर की तरह काम करता है। जैसे डॉक्स पे खड़ी हुई शिप्स होती हैं, अगर शिप्स के पास एक एंकर ना हो तो वो मूव करती रहेंगी, वैसे ही लाइफ में हमें भी एक एंकर चाहिए। मेरे हिसाब से मेडिटेशन हमारा वही एंकर है। आज की मेडिटेशन में मैं बीच में गाइड करूंगा आपको, बट आई गिव यू स्पेस टू बी विद योरसेल्फ, टू बी एट पीस, टू बी एट साइलेंस। तो शुरू करते हैं। एज ऑलवेज वी विल सिट स्ट्रेट, हैव अ वेरी स्ट्रेट स्पाइन, क्लोज आवर आईज। अगर आप अपना चश्मा उतारना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट टू। जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं, बहुत सारे थॉट्स होते हैं जो हमारे मन में आना शुरू हो जाते हैं। कुछ थॉट्स यहाँ रुकना चाहते हैं, कुछ होपफुली आगे मूव करना चाहते हैं। We don't have to embrace anything, we don't have to resist anything. All we have to do in our meditation is to be present. Present to our thoughts, present to ourselves, and present to the possibilities of what can happen. आप धीरे धीरे अपनी सांसों को ऑब्जर्व करिए। And just be present to all your thoughts, to your breath. आप चाहें तो अपने हाथों को अपनी लैप पे रख सकते हैं, अपने नीज के ऊपर रख सकते हैं, whatever feels comfortable to you. I'm going to give us a minute of silence right now so that you can stay present to yourself. In today's meditation, after we do our breath work, we will focus on our emotions. We will focus on building an emotional mastery. आज हम फोकस करेंगे उन सभी इमोशंस के ऊपर जो हमारे मन में हर समय आते हैं और जाते हैं। अगर हम इन इमोशंस के लिए प्रेजेंट हो जाएंगे, अगर हम इन इमोशंस को समझ जाएंगे, तो हम लाइफ में कैसे रिस्पॉन्ड करना है उसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे।
When we do a longer meditation, कई बार हमारी स्पाइन थोड़ी स्लैक कर जाती है और हमें उसको वापस सीधा लाना है। As always, चेहरे पर एक मुस्कान रखनी है। Keep a smile on your face. हम स्टार्ट करेंगे 10 डीप ब्रेथ्स के साथ। नाक से गहरी सांस अंदर लेके उसको धीरे से मुंह से छोड़ेंगे। इसको आप अपनी पेस पे करिए। 10 सांसों के बाद आई विल ब्रिंग यू बैक। अगर आप 8 पे हो तो भी ठीक है, अगर आप 12 पे पहुंच जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट बी प्रेजेंट टू एवरी ब्रेथ दैट यू टेक। लेट्स बिगिन टुगेदर। 10 deep breaths. जैसे ही आपकी 10 डीप ब्रेथ्स पूरी हो जाती हैं, फिर लेट योर ब्रीदिंग रिटर्न टू इट्स नॉर्मल रिदम। Keep a smile on your face and stay present to this moment. जब हम कहीं बाहर बैठ के मेडिटेट कर रहे होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट साउंड्स, ऑडिटरी इनपुट्स, बहुत चीजें होती हैं जो हमारी तरफ आ रही हैं। मेडिटेशन इज गोइंग टू हेल्प अस बिल्ड अ फिल्टर। जो हमें चाहिए वो हम रिसीव करें और जो नहीं चाहिए उसको वहीं छोड़ दें। Let's now start to focus on the emotions that are within us. We can feel joy, we can feel sorrow, we can feel gratitude, resentment, we can feel love, we can feel hate.
We can be relaxed or we can be anxious. We can be happy or we can be angry. जो भी इमोशंस हैं आपके अंदर, उन सब के लिए प्रेजेंट हो, उन सबको एज अ थर्ड पार्टी ऑब्जर्व करें. And in the next 5 minutes of silence, let's develop the strength, practice, and the habit of choosing the right emotion. जिस मोमेंट में हम जिस इमोशन के साथ रिएक्ट करना चाहते हैं, रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, हम उसको चूज करने की ताकत डेवलप करें. Just be present to yourself for the next 5 minutes, and then I invite you back to our meditation.
The ability and the opportunity of feeling all these emotions is a privilege that all of us have been given as human beings. We need to learn to use this privilege in a very thoughtful, in a very deep way. I hope this meditation helped you just do that. I'm going to request you to now open your eyes and come back to this moment. Thank you for being there on this meditation with me today. I hope इससे आपको कुछ फायदा हुआ हो, इससे आप एक centeredness develop कर पाए हो. Keep practicing meditation. It's a daily practice that we need to build. You can bookmark this video so that you can come back to it again and again. Comments में share करिए कि इस meditation में क्या था जो आपको special लगा या क्या आपने महसूस किया. अगर कोई और है जिसके ये काम आ सकती है meditation, जिसके लिए beneficial हो सकती है, please share it with them. Ignited Neurons on a mission to touch a billion lives positively. आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे इस मिशन में हमारा साथ देता है. So why don't you just do that today?